जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आई एम फील वेरी वेरी लकी, ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड कि भाई मेरे हाथ एक ऐसी शख्सियत लगी है जिन तक पहुंचना दरअसल बहुत मुश्किल है। दो ही विल नॉट अग्री विद मी, बट आई एम टेलिंग दिस टू यू, ओके, बिकॉज मेरे को अब तक याद है सन 2010 की बात है ये। आई वॉज डूइंग अ प्ले विद लुशन दुबे एंड आई वॉज हर प्रोडक्शन मैनेजर एट दैट टाइम. So I had to coordinate about a lot of things. I could coordinate with everyone, but I just could not reach to one number. That was Mr. Rahul Ram. I was like, मैं सिर्फ पटक गया था, मैं परेशान हो गया था कि but you know Mr. Rahul Ram is such an inspiration, and I will tell you one thing. They say the education in your early years जो आप पाते हो उस टाइम पे वही एक बहुत बड़ी बिल्डिंग इमारत बनती है ना. He is that living example. He did his schooling from one of the best schools in the country, St. Xavier School in Delhi. He thereafter went to one of the best colleges in the country. Why one of the best? I would call it the best, in fact. St. Stephen's College. He went further on and went to IIT Kanpur. A dream which only many people only dream of. He has lived it all. He further went off to US, went to Cornell University, and he got a scholarship and he did his doctorate. So he is basically Dr. Rahul Ram, who had a flying career. I mean, कहते ना जहां पे भी हाथ डालो वो चीज सोना बन जाती है. So इन्होंने अपना, thereafter he ventured into music. He joined Indian Ocean Band in 1991. The band was formed in 1990, and there, as I say, the rest is history. He has given music to several films with great renowned filmmakers like Anurag Kashyap and the work, and the list can just go on. And we have one thing in common. We both have acted and worked with a renowned filmmaker, Vishal Bhardwaj. I acted in his film Heather, and Rahul Bhai acted in his recent film. We will talk further on that, which is yet to be released, which should be released next year. We will further talk about that as well. But before that, please join your hands together wherever you are sitting, virtually, who all are watching this, and please welcome an inspiration, a personality, a genius, a very, very talented personality, Mr. Rahul Ram. Rahul Bhai, shukriya. Thank you for taking your time. Namaste. Namaste. Wow, what a build up. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure. पानी पीना है? पानी पी सकते हैं हम? पानी है आपके पास? Do you want to have? हाँ, पानी वाली सब कुछ है मेरे. मैं बिल्कुल ही. ठीक है. Or if you want, you can gulp down anything else, whichever is there. No issues. I'm okay. Okay, tell us a bit about your schooling from St. Xavier School in Delhi when you were there, and were you always interested in music? And your father is a renowned botanist, Mr. Mohon Ram. In fact, great personality, your father, your uncle, and you come from a very illustrious background regarding education, professionally, family, be it anything. In other words, both my parents were teachers. Both of them, yes. And my father was a professor of botany at Delhi University. My mother taught botany in Miranda House. तो हमारे घर में ना एक एकेडमिक टाइप एक, और हम बड़े भी यूनिवर्सिटी कैंपस पे हुए हैं, तो एक बड़ा एकेडमिक सा बैकग्राउंड था. और इसका फायदा ये होता है कि nobody pressures you to come first. कि उनको मालूम है कि क्या है ये चक्कर क्या है. तो उसमें क्या हुआ कि आराम से स्कूल में मैं बेसिक अपना पढ़ाई करता था, पास हो जाता था, एंड माय पेरेंट्स वर ठीक है, कर रहा है लड़का, कर रहा है, करने दो. देयर वाज नेवर प्रेशर, which is I think fantastic, because some parents lose it and pressure their kids and they don't realize that it is actually a negative thing. It depends on the kid, some kids, yeah, they need a little bit of push. Some kids do better without the push, without the pressure. And I think I'm so grateful to my parents that they just let me be. कि ऐसा भी नहीं था कि बेटा एग्जाम आ रहा था तू खेलने नहीं जाएगा. नहीं, जा खेल, क्योंकि वो खेल important. They understood that it's important to do other things and not just study all the time.
And I think that is something that really helped me. And I am blessed, man. I'm telling you, because I hear so many kids complain कि parents ये वो फलाना ढमकाना. मैं तो इतना लकी हूं ना, मैं क्या बताऊं. यानी हो गया, स्कूल वूल हो गया, बड़े आराम से निकल गए स्कूल से. और फिर मेरे को स्कूल में बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री टीचर थे, फादर मताइकल. So he got me really interested in chemistry. Now, imagine that both my parents were botanists. My sister went and did botany, did a BSc in botany. But I wanted to do chemistry. So my father told me the best chemistry course in the country is in IIT Kanpur. तो तू जेई. तो फिर मैंने जेई के ना, वो जो उन दिनों आते थे, कुछ एक आता था जो भी है. So you join something and you start doing those extra classes जो भी है, 11th 12th. मैंने 3 महीने करके कहा कि भैया ये प्लीज मुझे नहीं करना. It was terrible. It was hopeless. It was so, like, it just ate up my time, and it was not interesting at all. So I told my parents, thank you very much, but I'm not going to do this. Okay. So I'm so glad. I mean, I think if I joined, or who knows, मैंने जेई दिया ही नहीं. और मैं इत्तेफाकन फिर नेक्स्ट बेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ा हो रहा हूँ. सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पीछे रहता हूँ. सेंट स्टीफेंस कॉलेज की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मैंने जाके इंटरव्यू दिया. मेरे नंबर ठीक ठाक आ गए 12th में, और मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में केमिस्ट्री में घुस गया. और मैं बिल्कुल ही नेक्स्ट डोर रहता था. मैं चल के जाता था कॉलेज. एंड एज हैपेंस दैट the people who used to come from far away would reach class way before the hostelers and me. Because hostelers हम जानते हैं ना कि 3 मिनट में पहुंच जाए, तो हम लटकते हुए किसी तरह पहुंच जाते थे. And I had a great 3 years in Stephens. I had started playing guitar when I was in class 8, I think, just after I finished class 8. And I used to play with my school band. Then in college, I started playing a lot of guitar. I played actually with 3 different bands in college. Well, 4 if you count the college band. I didn't really play very much with the college band. एक दो बार बजाया होगा. So I became a kind of semi-professional musician कॉलेज में, कि हमारा बैंड था और हम लोग अलग अलग कॉलेज फेस्टिवल्स पे प्रोफेशनल नाइट पे परफॉर्म करते थे. तो और मैं इतना गधा था कि मेरे को जो पैसे मिलते थे ना, मैं आके माँ को दे देता. एंड उन दिनों में ना, तो सोचना, उन दिनों में 1,000 रुपए मिल रहे हैं. 1,000 रुपए 1981-82 में, इट वॉज अ लॉट ऑफ मनी. आई एम सीरियस. इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. And when my mother would say, तेरे को नहीं चाहिए, I would say, हाँ माँ 20 रुपए दे दो. Because 20 रुपए एक हफ्ते में बहुत लंबा चलता था. So, it was very fascinating. It was beautiful. At that time, I also got interested in environmental stuff. मैं जब 11th क्लास पास किया, तब मैं चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा जी के आश्रम में जाके मैंने 1 महीना गढ़वाल में बिताया. और हम कुछ 250 किलोमीटर चले अलग अलग गांव. और वहां पे जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, और जो लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही थी एनवायरमेंटल इश्यूज से, और चिपको मूवमेंट से जुड़ के हमने बहुत कुछ सीखा. सो आई थिंक दैट बिकेम अ ट्रांसफॉर्मेटरी इनिशियल थिंग अबाउट माय इंटरेस्ट इन एनवायरमेंटल स्टफ. you're activist as well. So क्या ये एक्टिविज्म आपके अंदर जो चिपको मूवमेंट से शुरू हुआ या उससे पहले थोड़ा था? पहले से था. मेरे को एनवायरमेंटल इश्यूज में काफी इंटरेस्ट था. और मुझे याद है कि जब साइलेंट वैली, I think that was something that sparked off a lot of us. When there was Silent Valley करके केरला में एक जगह है जो जहाँ पे proposed एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था. And Silent Valley was one of the oldest old growth forests in India. So it was quite interesting because that's when it all started off. You see, the environmental movement essentially started off in the 60s, late 60s.
with a book called Silent Spring by Rachel Carson, where she detailed how songbirds were dying in the US because of excessive use of DDT. उस टाइम तक ऐसा लगता था कि केमिस्ट्री ने एक रेवोल्यूशन कर दिया, सब कुछ अच्छे के लिए कर दिया, सब कुछ बदल दिया, अब हम आगे बढ़ेंगे. किसी को नहीं मालूम था कि इसके साइड इम्पैक्ट्स क्या हैं. उस किताब ने एक पूरा मैं क्या कहूं, मेरे ख्याल पूरी दुनिया को एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में जागरूक किया. वहां पे सुंदरलाल बहुगुणा जी बिल्कुल अलग एनवायरमेंटल इश्यूज पे हो रहे थे कि लोगों को फर्क जो पड़ता है डेली लाइफ में, जब पानी के स्रोत सूख जाते हैं, जब जंगल कट जाते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल पे रिलाई करते हैं अपनी चीजों के लिए. So there's a whole different streams of environmentalism started off in the late 60s and early 70s, and by the time it reached me, and I was it appealed to me somehow, and I got into it in a big way, and I still am. I still think of myself as an environmentalist first. Of course. Ji, ji, ji. Tell us about your years after IIT when you went off to US and to Cornell University and when you got your scholarship. तो आपने अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए और क्या जब आपको स्कॉलरशिप मिली और अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, so would you have still have gone there? अरे पैसे गरीब गरीब बाबू, अपर मिडिल क्लास तो ठीक है, बट इन सोशल स्टेटस अपर मिडिल क्लास, इकोनॉमिक स्टेटस लोअर मिडिल क्लास, there is no way my parents could have afforded to send me to Cornell. So I actually, let me tell you something which will fascinate you. So in my class of 13, there was a class of 13 only in IIT MSc chemistry, of whom 9 were applying abroad, 4 were not. So we actually formed a committee, the chair of which was our topper who was not applying abroad. Because he is not applying abroad and he's a topper, his word carries weight. So we actually distributed कि who should apply where. कि we said देखो भाई, तेरा GPA हाई है, तू 3 टॉप यूनिवर्सिटी, 2 मिडिल यूनिवर्सिटी, 3 लोअर रैंक्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर. So we to maximize the chances of getting a scholarship, we distributed. And then we distributed कि recommendation किससे लेना चाहिए ताकि किसी एक प्रोफेसर पे ज्यादा बोझ ना पड़ जाए. Then we distributed कि भैया सारे एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई मत करो. Let there be no overlap. And we had 100% success rate. Wow. That's when I learned cooperation is much better than competition. Very well said. Very well said. Very well said. Ji. So tell us about your... Okay, so I applied to 8 universities. I got scholarships to 6. The 2 I didn't get, one was, I think, Harvard, and one more, I forget. So I got scholarships to 6 universities, but the place I joined, Cornell, was important to me, A, because the program sounded very interesting, and B, because my parents had both gone to Cornell as postgraduate fellows in 1959 to 1961. तो मेरे को लगा कि ठीक है यार, उसके 27 साल 25 साल बाद उनका बेटा 35 साल बाद 25, हाँ, उनका बेटा जा रहा है तो मजा आएगा. And indeed, so I went to Cornell, and it was another mind-opening experience because I got to meet for the first time people from so many different countries, so many different cultures, and so many different ideas, and such a different environment. And my professor was also very cool. मैंने प्रोफेसर को जाके बोला कि सर देखो ऐसा है कि हमारे देश में ना, अगर एक बंदा 10th के बाद साइंस चुनता है तो वो कभी भी सोशल साइंस पढ़ ही नहीं सकता है, और मुझे पढ़ना है क्योंकि मैं जब ये चिपको गया था और ये सब, so I knew that social science is very important to know as well. So he said, go ahead.
As long as you do what's required for the PhD, I don't mind. So I got to do a lot of social science and development classes at Cornell, and that's the flexibility which I love, which we don't have, unfortunately, in most of my universities. भाई तू chemistry कर रहा तो chemistry करना, चुपचाप मैथ्स पढ़, फिजिक्स पढ़, घर जा. वहां पे ये था कि तू पीएचडी कर रहा है टॉक्सिकोलॉजी, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में, पर मेरा एक देयर आर वन मेजर एंड टू माइनर्स. एक माइनर था इकोलॉजी व्हिच आई नीडेड, दूसरा माइनर मैंने डेवलपमेंट सोशियोलॉजी लिया. और उसके अंतर्गत मैं इतने अलग अलग लोगों से मिला हूं और इतने अलग अलग आइडियाज से मिला हूं. यू नो, मीटिंग आइडियाज इज ब्यूटीफुल. मीटिंग पीपल इज ओके, बट मीटिंग आइडियाज, यू नो, an idea is much bigger, because an idea makes you meet thousands of people. You said it, bang on. And a person makes you meet lots of ideas, but the overlap of the two is what is important. You said it, bang People on. in different. Go ahead, go ahead. जो TEDx है, TEDx TED की भी जो टैगलाइन है, TED और TEDx की, आइडियाज वर्थ शेयरिंग. तो जब मैं TEDx से बोलने लग गया था, तो इट्स लाइक, यू नो, आई वाज शेयरिंग द आइडियाज, एंड 4 या 5 TEDx टॉक्स दे चुका था मैं. तो मुझे किसी ने बोला, वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम who's incidentally also a TEDx organizer, इसे बस अब 4-5 दे चुके हो, अब मत देना और TEDx talk, it's not considered good in the TEDxter circles. Then another friend of mine, who is incidentally also a very big TEDx organizer, he also gave me a call, and he said, "Nahi, I heard you spoke to so and so. Don't take that advice. As long as you are not sharing the idea multiple times, it's okay. One speaker can give आप 100 TEDx talk दो, कोई बात नहीं." And he gave me the example of कि अगर आप speaker हो as an actor, अगर आप 100 फिल्में sign कर रहे हो तो अच्छी बात है. So what you said about ideas is bang on, and as they say, traveling is the best education actually. When you travel and you meet people Totally. and you get different ideas, and later on you, as with part of Indian Ocean, as I would call it, a rock star, which you are. So आपने इतने ट्रैवल किया होगा, आपने, you must have gone and performed and where not, और अलग तरीके की मेहमान नवाजी खातिरदारी हुई होगी. You must have had a great, I mean, this is a life which people only dream in their wildest dreams. They dream of living, which you are living. See, the beautiful thing is, when I joined Indian Ocean, I had no idea कि ये सब होगा. I joined it because I loved the music. अब म्यूजिक, अब ये कह दो कि म्यूजिक मुझे ले गया ऐसे जगह. So it's not me, it's the music. And yes, I added to the music, but it's the music that took me to so many different places. I mean, I've been to maybe 35, 40 different countries, playing across 5 continents, and seen so much and learned so much. And you're so right, travel broadens the mind. You see different cultures, you see different people have different ways of doing different things, and it's all acceptable. ये की है, खास करके आजकल जब अलग अलग देशों में ऐसे लग रहा है ना कि भाई सिर्फ ऐसे होना चाहिए. नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए. वहां पे तो ऐसे होता है. इंडिया देख लो ना यार, इंडिया में एक ही चीज को 10 अलग अलग वेज में किया जाता है. अब आप म्यूजिक में ही देख लो, क्लासिकल म्यूजिक में देख लो, कर्नाटिक और हिंदुस्तानी, राग सेम है, ट्रीटमेंट अलग है, मजा अलग है, रिवाज अलग है, कल्चर अलग है, देश एक है. You know, so this is what is beautiful. And Indian Ocean, I think Indian Ocean is something unique, and I'm so proud to be part of Indian Ocean, and so privileged and so lucky कि we bring actually different parts of India to the world. And इंडिया की richness को हम लोग परखते हैं और अपने वे में दुनिया को पेश करते हैं. पर हमारा ये फॉर्मूला नहीं है कि चलो एक उत्तराखंड का गाना और एक हिमाचल का गाना और एक राजस्थान का गाना और एक तमिलनाडु का गाना और एक बंगाल. ऐसा नहीं है. जो भाता है, जो अच्छा लगता है, उसका वर्षन, उसकी क्या कहूं, माटी का जो सुगंध है,
वो दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाना, एंड यू विल बी अमेज्ड एट हाउ इट वर्क्स, इट ट्रांसलेट्स अक्रॉस कल्चर्स. मतलब आई हैव प्लेड इन इंडोनेशिया to an audience of 5,000 people in Jogjakarta, let's say, स्टेडियम में बजा रहे थे, और वहां पे उनको एक शब्द नहीं समझ आ रहा था हम क्या कह रहे थे, क्योंकि लिरिक्स क्या है, हिंदी में है, अलग अलग हिंदी भाषाओं में, मगर द म्यूजिक बैंड, यू शुड हैव सीन देम, दे वर रॉकिंग. And one of the cutest things of that is our drummer is a very good looking boy, Amit Kilam. And while he was playing, there was a whole bunch of hijab clad girls who were hanging around him, tugging at his leg, wanting to take photos with him. It was so beautiful. You know, it is a very different view of this world. कि हाँ यार, ये तो है, good looking boy is a good looking boy no matter where he is, and a good looking girl is a good looking girl no matter where he is. असर सेम होता है. Very true, very true. हाँ. बिल्कुल सही फरमाया आपने. You know, so tell us, in 91 when you joined Indian Ocean, I mean, you know, so initially how was the start with them? It was a newly formed band in 1990, इतना पुराना भी नहीं हुआ था, and initial struggles तो होते ही हैं हर एक एंटरप्राइज में, हर एक. जी. हाँ, तो स्ट्रगल दिमाग में होता है, पता है. If you see it as a struggle, it will be a struggle. If you see it as fun, it will be fun. The first 5 years of Indian Ocean's existence, okay, 90, 91, 92, 93, 94, 5 साल में इंडियन ओशन ने कुल मिला के सिर्फ 7 कॉन्सर्ट्स किए. पहले 4 साल में इंडियन ओशन ने पूरे 4 साल में 4 बंदों ने 1 लाख रुपए से कम कमाया, which works out to an average of 6,000 rupees per year. सोचो ना, 96,000 4 साल, 24,000 4 बंदे, 6,000. We spent more money probably coming to practice than we made in return. But the thing was, the music was so fantastic that we loved it. And every time we did a show, the audience was like, wow, we have never heard anything like this. It was a new sound. It was not a new sound that we deliberately made. It was an organically arrived at new sound. Full credit to Shushmit and Oshim, who started Indian Ocean, for having given the direction. And then we added to it, and it moved in ways that nobody could predict initially. Nobody in Indian Ocean knew that here we are 32 years later, where Indian Ocean has played over 1,200 concerts. उस टाइम पे किसी को कुछ पता नहीं था, किसी के कुछ अरमान नहीं थे, कुछ भी नहीं था. You see, that's the thing, कि अरमान होने से ना केला हो जाता है. That is true. If you do it for, expectations, you know, if you do it for fun, then everything is a bonus. If you do it for Arman, then everything is a challenge. Yeah, very well said. And the other thing I have learned as musicians, unfortunately, we guys have compressed our emotional band. We neither get too excited nor do we get too depressed. कि क्या होता है ना म्यूजिशियन के साथ, कि लोग हमारे बैंड के टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं गाजर. गाजर लटकाता है ना कोई तुम्हारे सामने, that old economic story of the donkey and the carrot. So गाजर बहुत लटकाते हैं हमारे सामने लोग, कि आप ये कर दो सर, आपको ये मिलेगा, हम आपको ये कर दें, and usually it involves कि फ्री में बजा दो. है, फ्री में बजा दो, फ्री में एक्ट कर दो, फ्री में कर दो, आपको बहुत फायदा. सर ये स्क्रिप्ट है, बड़ी मजेदार स्क्रिप्ट है, बड़ा अच्छा रोल है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, बट सर बजट नहीं है. दैट्स अ स्टैंडर्ड थिंग. हाँ, इनफैक्ट हमारा ओशिम जो हमारा तबला प्लेयर और वोकलिस्ट था, इतना बदमाश था कि जब कोई फिल्म वाला आता था ना हमारे पास स्क्रिप्ट लेके, वो पूछता था भाई पैसे हैं, दैट मैन वुड
से नहीं, इसे ठीक है फिर हम कर लेंगे, क्योंकि पैसे होने से नहीं होता है। Very well said. Very well said. So when you are new, they are new, nobody has money, but everybody has dreams. Right. And I think it's great. I think it's wonderful that phase of life where you need not really you need not formulate or put down your dreams in words. It's a abstract dream कि कुछ एक होगा, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं उसमें मजा है, और अगर नहीं भी हुआ तो मजा तो आया ना यार. Exactly. Yeah. That is very true. That's very true. And then, Rahul bhai, then of course Indian Ocean picked up and became in such a huge, मतलब मैं brand क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा rock band, मैं बोलूँगा मैं मतलब it is. I'm a big fan of Indian Ocean myself, and all of us are. Who is not basically? अच्छा, आपने बहुत सी फिल्म्स को, आपने फिल्म की बात करी, आपने बहुत सी फिल्म्स को म्यूजिक दे रखा है, बहुत सी अन्य फिल्म है. अच्छा, ये सबसे खास तो सभी होंगी, सबसे खास आपको कुछ ऐसी यादें किसी एक फिल्म में म्यूजिक देते हुए जो आपको आपके दिल के बहुत करीब हो? देखो क्या होता है कि हर फिल्म में अलग अलग मेमोरीज आती है. अब ब्लैक फ्राइडे वाज आवर फर्स्ट मेजर बॉलीवुड sort of called film, right? Anurag Kashyap, who at that time nobody knew. अभी अभी शुरू हुआ था, है ना. 2002 की बात है. 2002 में हमारी बात हुई या 3 में हमारी बात हुई, और हमने म्यूजिक करना शुरू किया. बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी अनुराग ने, पर जैसे मुझे लगता है, अभी भी लगता है कि थोड़ी लंबी थी, कि क्योंकि मेरे को लगता है कि उसकी उस टाइम पे जो आरती उसकी बीवी थी, एडिटर थी, तो वो एडिटर पे हावी हो गया. नॉर्मली द एडिटर इज द वन हु टेल्स द डायरेक्टर शट अप, राइट या कंप्रेस कर. तो उस एक्सपीरियंस को बहुत मजा आया. मेरा आई टेल यू, दे केम टू आवर स्टूडियो, पीयूष एंड अनुराग, and we played something, and Bande got written by Piyush in half an hour in our studio in Khajur Road in Karol Bagh. wow. The first, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे की कुदरत है, इतना ही लिखा पीयूष ने, बाकी के वर्सेस बाद में आए. और फिर हम लोग बंबई गए, 2 महीने हम बंबई में रहे, पूरा म्यूजिक रिकॉर्ड किया. मैजिकल था, क्योंकि क्या था कि फिल्म में क्या होता है कि अनुराग वुड सेंड अस वी सैट थ्रू द होल फिल्म, वी बोथ आइडेंटिफाइड प्लेसेस वेयर म्यूजिक हैड टू बी डन, वी शार्पन्ड इट डाउन, ये मूड ये है, ये है, वो ये है. और हमने पहली बार उस फिल्म में बैकग्राउंड किया, जो is not played on just our instruments. We used a lot of computer sounds, and where Amit Kilam did amazing work, because he was the youngest and possibly most used to working on computers. And we would then we would be amazed. अरे ये भी होता है, अच्छा वो भी होता है. तो सीखने को बहुत कुछ मिला, और एक बहुत ही सुंदर स्टूडियो में, स्पेक्ट्रल हार्मनी में, बम्बई में जाके हमने काम किया. और उस स्टूडियो में ना, उस टाइम पे 3 फिल्में बन रही थी साथ साथ, और तुम चौंक जाओगे. एक तो ब्लैक फ्राइडे, जिसमें हम, एक रेनकोट, ऑफ कोर्स जी. और तीसरा इज द मोस्ट, बिकॉज घोसला का घोसला, राइट व्हाट अ फिल्म. राइट बहुत. so it was very live and interactive, and it was our first taste of Bollywood. And let me tell you something, that this film and song Bande, released in 2005, Indian Ocean had been in existence for 15 years. That one song made us realize the impact of Bollywood. कि 15 साल हमने जो घिस के काम किया, उसके पहले 2 एल्बम रिलीज किए,
3 एल्बम रिलीज किए, कंदीसा, डेजर्ट रेन एंड द फर्स्ट एल्बम इंडियन ओशन. Didn't have as much of an impact as that one song Bande. The power of Bollywood is quite humbling and it's quite eye-opening. And because आप सोच लो कि हम इंडी जो नॉन फॉर्मल स्ट्रीम से म्यूजिशियंस आते हैं, उसमें बहुत म्यूजिशियन से मिला हूं जो कहते हैं जरा हमको नहीं करना बॉलीवुड, और मैं कहता हूँ वेट टिल दे गिव यू एन ऑफर. Exactly. No, I know what it is. The medium is so large. I come from a hardcore theater background और मैं बचपन से प्लेस करता आया हूँ. तो मैंने इतने प्लेस करे हैं. आई हैव आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग और बोस्टिंग अबाउट इट. जो फैक्ट है बता रहा हूँ मैंने भाई मोर देन 100 ऑफ प्लेस कर रखे हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट प्ले राइट्स एंड डिफरेंट जॉनर्स ऑफ प्लेस. और देखिए प्ले का मीडियम क्या है, मैक्सिमम एक दिन में आप 200, 300, 400, 500 मैं तो कह रहा हूँ ऑडियंस बैठ के आ जाएंगे. एक दिन में आप एक शो कर लेंगे, 2 शो कर लेंगे. चलिए मैं तो कह रहा हूँ अगर बहुत स्टैमिना है, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, 3 शो भी कर लिए, ऐसा भी हुआ है. 300 ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हुआ है. बट इट्स लाइक बीइंग एन आर्टिस्ट, यू कैन अंडरस्टैंड द पैशन, जो जुनून, जो जज्बा है. वी हैव ट्रैवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ एंड थिएटर कर करके, मगर उसके बावजूद. और थिएटर वाले हमेशा गरीब होते हैं. हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल. तो उसके बाद लोग पूछेंगे आप करते क्या हो भैया. हम एक्टिंग करते हैं रंगमंच पे. तो मतलब एक्टर मतलब जब तक आप, इन अदर वर्ड्स, आप शाहरुख खान नहीं है, आप सुपरस्टार नहीं है, आप मेगा स्टार नहीं है, तब तक आप एक्टर नहीं है. लोगों का ऐसा मानना है, पब्लिक परसेप्शन नॉर्मली. एंड इफ यू से एक्टर, यू डू थिएटर, यू डू प्लेस, तो मतलब फर्स्टली देयर इज नो लिविंग एज अ स्टेज एक्टर. सेकेंडली एक्टर कभी देखा ही नहीं. अगर एक्टर है तो फॉर देम इट इज. सो आई नो. एंड आप एक फिल्म कर ली एज एन एक्टर, दुनिया आपका शक्ल, चेहरा, नाम सब जान जाएगी कि भाई ये तो. यस, द मीडियम इज बिगर बिकॉज मल्टीप्लेक्स में एक दिन में 3-3, 4-4 शो हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. कितने स्क्रीन हैं. सो यस, द रीच इज मच बिगर. It is like, I give my different analysis on television almost every day on different channels. If I do a webinar जिसमें 100 लोग हैं, 500 लोग हैं वेबिनार में, मगर अगर मैं टीवी पे बोल रहा हूं तो कितने मिलियन लोग एक टाइम पे देख रहे होंगे. आपका नाम भी पढ़ लेंगे और फिर आपको सोशल मीडिया पे मैसेज करेंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, यहाँ पे ढूंढ निकालेंगे आपको. So what you are saying is I can so connect and relate to that. Yes, it is. And you must have met lot of theater actors who said, अरे मेरे को बॉलीवुड नहीं करना. मिले हो ना? मत करते हैं ऐसे होता है. चांस मिलते ही करते हैं. हाँ. See, it's like I'm telling you, we have to break these false walls. ये झूठी दीवारें हैं कि मैं थिएटर वाला हूं, मैं फिल्म नहीं करूंगा. Now, as you know, that theater involves more exaggerated movements and film में वो stupid लगता है. Film is much more subtle. And theater, because of its way, has to be more, there has to be more voice projection, ये वो लाइट पकड़ना, ये करना, वो करना. जबकि फिल्म में वो लोग आपके लिए कर रहे हैं सब कुछ. आपको जितने कम में जितना ज्यादा डिलीवर कर सकते हो, दैट इज की, आई थिंक. एंड फॉर मी द डिफरेंस इज लाइक प्लेइंग लाइव एंड कंपोजिंग रिकॉर्डेड म्यूजिक. रिकॉर्डेड म्यूजिक में आपको थोड़ा बंधा हुआ होना पड़ता है. लाइव में तो आप पागल हो सकते हो. आई डोंट थिंक यू कैन गो पागल ऑन स्क्रीन इन अ फिल्म. यू कैन गो पागल ऑन स्टेज, है कि नहीं? बिल्कुल. इसलिए मजा भी तो है ना, स्टेज का मजा. और फिल्म कैन नॉट रिप्लेस स्टेज का मजा. करेक्ट. एंड देन यू से कि भाई नहीं वो पैसे की वजह से कर लिया बिकॉज घर में चूल्हा जलाना है. सो बट इट इज, आई नो व्हाट यू मीन. बोथ आर गुड. आई विल गिव यू शंकर महादेवन. ओके, शंकर महादेवन, he's a genius, that man. So I was traveling to Bombay in order to travel to Goa. And Shankar was sitting next to me and I said, Shankar क्या? कहता है भाई शादी का शो किया है कल रात को दिल्ली में, और आज मेरा शक्ति के साथ शो है गोवा में.
मैंने कहा शंकर, how do you know what he said? Brother, one for the pocket, one for the heart. So दोनों करना पड़ता है यार. Why is it okay for an artist to be poor? एक एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आर्टिस्ट को गरीब होना चाहिए, नहीं तो वो ट्रू आर्टिस्ट नहीं है. अरे लाइक दैट सिली फिल्म रॉकस्टार, where the you understand where the premise was that suffering will make you a great musician. था ना एक प्रीमाइस, गलत सा प्रीमाइस था वो मेरे दिमाग में कि मैं मानता हूँ यार मैं बिना सफर करके भी अच्छा म्यूजिक कर सकता हूँ यार, मेरे को सफर करने की जरूरत नहीं है. अगर पेट भरा होगा जिंदगी का सफर है इनफ. अगर पेट भरा होगा मेरा तो आके मैं अच्छी एक्टिंग कर पाऊंगा. भूख लग रही है, और खाली पेट हूं भाई, क्या एक्टिंग करूंगा मैं? सिंपल सी बात है. ध्यान होगा भाई खाना कब मिलेगा मेरे को. So what you're saying is very true. So your association with Anurag Kashyap, it went on till Gulal उसके बाद फिर, and Gulal was on student politics. So tell us about your experience on Gulal. In fact, that's something which would be after Black Friday and then day after Gulal. So the first time we met Anurag, he actually met us to explore Gulal. Okay. Not for Black Friday. Oh, okay. Yeah, so we had played a concert in IIT Mumbai, and then we went to Anurag's office after the concert. आपने मूडनिगो में परफॉर्म किया था ये? हाँ, मुंडई में परफॉर्म करके हम अनुराग के ऑफिस गए. वहां पे I am not mistaken, it was the year 1999. कुछ एक ऐसा बहुत पहले. हाँ. You know why? Because I was a student at Ferguson College in Pune, और हम सब मुंडई के लिए आए थे, and I was doing a play where Dolly Thakur was one of a jury in that, and you were there on stage, and we were looking at you with full awe. Okay. So I'm not sure, but it could be well be. एंड उस टाइम पे उसने गुलाल की बात की थी, जहां उसने कहा था कि ये जो गाना है ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. इसका भी मैं एक वर्जन इस फिल्म में डालना चाहता हूं. नाउ I mean, of course, historically that never happened, and Gulal then Piyush Mishra did, and he did. I think Gulal is one of the best soundtracks we've had in the last 15-20 years. And I was so happy that Oshim and I got to sing 2 songs for the film. And मैं कहानी बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो एक गाना मैंने उसमें गाया है गुलाल में कि रात के मुसाफिर तू भागना संभल के, पोटली में तेरी हो आग ना संभल के. पीयूष का लिखा हुआ. और अनुराग, I sat down and did a version, and I sent him. And he said, Rahul, no, here. Imagine you are alone in a dark room and you're singing this song. This is the mood I want. So he actually let me live with the song. You see, what happens in Bollywood nowadays is you walk into a studio, a song is given to you, you learn the lyrics, and you sing it. You know nothing about the film. You know nothing about the situation. You know nothing. Whereas here, I was given the music and given the lyrics and allowed to live with the song for a month or 2 weeks, something like that. It makes a big difference. कि फिर वो गाना ना अपने जहन के अंदर, जैसे तुम प्ले करते हो यार, तुम तो जानते हो यार कि प्ले के रिहर्सल करते 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 कैरेक्टर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उतरता है. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 6 साल मैंने भी प्ले किए, वन एक्ट प्ले अपने जेवियर्स में ना. So I know that how gradually the script starts making sense and how gradually your role evolves over the thing. Similarly, a song grows on you. Why does Indian Ocean sound so good? Because we've lived with the song for at least 100 times before we play it on stage. So we know every aspect of that song, and yet it can be changed on stage. जैसे तुम भी जानते हो ना यार कि रोल में आज मैंने ये किया, एक
अलग कुछ किया. On the 7th show, you changed something and it worked. And then you're like, oh my God, that's so beautiful. Why didn't I think of it earlier? And your director is, yeah, man. Yeah, Baba, that's what I wanted. Yeah, beautiful, beautiful. होता है ना बिल्कुल यार बिल्कुल. मैं कैसे that's the thing that I don't know if we can explain this to people who don't do this for a living. But there is a joy in creation and there is a joy in innovation, which is what I think keeps us going. कि Right. हमेशा पुराने से पुराने चीज में भी कुछ नया दिखता है, इश्क की तरह. That when I'm in love with somebody for 40 years, I'm still in love with them and they still can surprise me. And I think that's beautiful. बिल्कुल बिल्कुल जी. Hmm. No, you have worked with, see, Anurag, yes, and you have worked with Antav, जिसकी बहुत लोगों की ड्रीम होती है. With we have nothing in common with Vishal Bhardwaj. So tell us about your experience on working with Vishal Bhardwaj, and you also did an acting workshop with Nasir Saab. With Nasir Saab. Oh, yeah. So Vishal, I have always admired Vishal Bhardwaj. Well, I think he's one of the Renaissance man, जिसे कहते हैं ना यार, म्यूजिशियन फर्स्ट. मतलब हमारे सामने म्यूजिशियन के रूप में प्रकट हुए. जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला. वो देखो विशाल back then, Jungle Book, Hindi version. Then I think he moved and Chappa Chappa Charkha Chale was his first film. Marches. जी. And then he wrote, he started writing, he started directing, he started. मैंने लगा कि यार ये आदमी सब कुछ कर सकता है यार, कितना अमेजिंग है. और मैं प्रिविलेज था कि मैं 2-3 बार उनसे पहले भी मिला था, क्योंकि मेरा दोस्त केजे सिंह विशाल के साथ साउंड इंजीनियर था काफी साल. और केजे मेरा अच्छा दोस्त है दिल्ली से. केजे इज इनफैक्ट द गाय हु प्रोड्यूस्ड कंदीसा एंड ब्लैक फ्राइडे. ही वाज द साउंड इंजीनियर एंड द प्रोडक्शन इंजीनियर एंड डेजर्ट रेन. 3 एल्बम पे केजे रहा है. उसने तंदनू मिक्स किया है, बहुत कुछ किया है केजे के साथ हमने. तो केजे वी यूज्ड टू वर्क विद विशाल फॉर इयर्स. And then when I got this call, so I actually formally got a call from a casting agency. And they said, this film, Vishal Bhardwaj. I said, okay, I'm doing it. They said, no, first you have to audition. I said, yeah, I'll audition. But वो सब तो ठीक है, पर मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है. The chance to work with him. And so actually, so then he explained to me what the role is, and I'm singing in the film also. So I'm actually, so we first did the singing part, and one song, and then the acting, and kuch hua suddenly. Something has happened to the sound. नहीं. No, I सही have frozen. Okay. नहीं. No, sir. I hear you. Yeah, okay. So मुझे लगा when you met him, तब कुछ हुआ suddenly. So I was like, I got so no. intrigued. क्या हुआ? I met him, and here's the beautiful part, that Vishal, first the singing part. Okay, I'll tell you about the singing part first. कि मैं गाना गाने गया, उन्होंने मेरे को भेजा था अपना गाया हुआ एक. And then he lets you take पंगे. बड़े सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो कहते हैं नोट टू नोट जो मैंने किया है वही तू करेगा. और उसमें क्या है कि वो सिर्फ मेरा टेक्सचर चाहते हैं, मेरा दिमाग नहीं चाहते. विशाल इतना इंटेलिजेंट इंसान है कि वो आपका टेक्सचर तो चाहता है, पर आपका दिमाग भी चाहता है. क्योंकि यार everybody has a different brain and they work on the same thing in different ways, and that's where the magic can happen. फिर जब मैं उनके साथ मैंने एक्टिंग की और स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए आया था मैं मुंबई. उसके बाद उन्होंने कहा जी वर्कशॉप है नसीर भाई के साथ. मैंने कहा यार ये तो सोने पे सुहागा है यार, चांस मेरे को लाइफ में मिल रहा है. So I went. It was beautiful. He's such a fantastic man, and it's one of I treasure it.
3 घंटे वर्कशॉप की हमने उनके साथ, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि नसीर भाई जानते भी हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता Of हूँ. course, his son is a musician, Imad. In Imad, fact, yeah, I know, but your son may be a musician, so what? It's got so nothing to do with whether you know आपको Indian Ocean or not. नहीं राहुल भाई, आपको सब जानते हैं भैया, आपको सब जानते हैं, आपको यार सब जानते हैं. मैं कुछ भी अज्यूम नहीं करता हूँ. हाँ. It's always better to be like that. So I was very pleased and I had such a great time. And there were 4 of us at the workshop, and we had an absolute blast. And that man is wonderful and such a privilege and a genius. उसके बाद मैं गया कनाडा, acting for the same film, where they are. I mean, it was shot in Canada, so maybe I'm giving away something, but in the film it's not Canada, it's the US, but it was a make believe because US में वीजा नहीं मिल रहे थे. अब ये हुआ कि कनाडा में भी वीजा मिलने का प्रॉब्लम. The entire costume department did not get visas. So under pressure, 40 people did not get visas out of 100. Now you're shooting in a foreign country, in a place you've never been to before except for the recce, without the adequate backup. You're having to hire locally. Your budgets are going up. You're doing outdoor shoots. You're doing a crowd shoot. You're doing this. You're doing that. I never heard the man yell even once. I think that's amazing. The grace is something which is, nobody talks about grace anymore, I think. But grace is so important. That man has it within him. I'm sure you have faced the same thing. कि उस Absolutely. आदमी के अंदर, है ना? हैदर के टाइम पे ही सेड कि हाँ. अली तुम एक प्लाटून लीड करके जा रहे हो और तुमको कॉर्डन सर्च करना है ऑपरेशन. दैट्स ऑल ही टोल्ड मी. देन कैसे करोगे? आई टोल्ड हिम सर, अगर मैं सर्विंग आर्मी ऑफिसर होता, जैसे हमने पहले कर रखे हैं, हम ऐसे, ये तरीका है, हम ऐसे करते. जो फिल्मों में दिखाते हैं, फ्लैंकिंग करते हुए आ रहे हैं, सुपरमैन बनते हुए जा रहे हैं, नो व्हाट ऑल दे शो, दैट्स ऑल बंकम. ऐसे नहीं होते, वैसे नहीं होएगा बिल्कुल. और जैसे तुम कहोगे, हकीकत में जो तुमने करा है बिल्कुल वैसे ही होएगा. एंड ही गेव मी द फ्रीडम. एंड राहुल भाई, आई गॉट 30 एक्स सर्विसमैन, माय ओल्ड कलीग्स फ्रॉम द आर्मी, जो भी फौज में नहीं थे, वो अपनी वर्दी भी लेकर आए, अपनी बूल्ड बेल्ट भी लेके आए, अपनी एफएस कैप भी लेके आए, अपनी डांगरी भी लेकर आए. एंड हमने जो एक्शन किया है, वी डिड इट विद रियल सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, एंड वी डिड इट वेयरिंग आवर ऑथेंटिक ओल्ड यूनिफॉर्म्स. दो there with all the wonderful costume and everything, but हमने कहा जो हमारे एक्चुअल जो डीएमएस बूट्स थे, जो एक्चुअल हमने वर्दी पहनी थी, हमने एक्शन वैसे ही किया. और जिसने भी फौजी ने वो सीन देखा है, वो बोलता है भाई, दिस लाइक आउट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट्री, दिस इज सो रियल. Because like I remember that scene where there's a village and there's a guy sitting in a car being asked to identify people as they go past. Oh yes, that is, yeah. Oh man, वही वाला सीन था, राहुल भाई, है ना? वही सीन था. And I was a man next to a gypsy with a big mustache and who was identifying. ये था, okay. ये था. Who says no militant dead or alive is worth my soldier's life. Party, load, ready, fire, boom, and they blow up the house. They blow up the house. Yeah. So yeah, see, that's the thing, that here is a man who is constantly willing to learn. And he knows that you have done it live. Who the hell is he to tell you what to do? And he takes that. And it makes his films better. It makes his films more interesting. It makes him more interesting. So I remember that when we were shooting this song, तो मेरे को लिरिक्स फुल्ली याद नहीं थे, तो उसने दूसरे को बोला, हाँ राहुल की तरह करो ना, जो जब लिरिक्स याद नहीं ना, थोड़ा मुंह नीचे कर लेना. So I thought he hadn't seen, but he was seeing everything. Right. Yeah. Oh, it was beautiful. Anyway, I'm hoping. Listen, Ali, I'm hoping for a film career after this film comes out. You will, Rahul bhai, you will. I mean, that's what I'm saying. You are
a genius like the way you were saying about, you're talking about Vishal. Yes, no doubt. You know, वो लिखते भी हैं, गाते भी हैं. He directs also. I mean, what not he does not do. Yeah. I mean, Rahul bhai, your strongest point is first, you are a wonderful human being. कसम से. I mean, मतलब बहुत rare होते हैं ऐसे simple, easy going. 2010 में ना, मैं I was trying to reach you and all. तो मैं आई वाज थिंकिंग यार राहुल भाई भाई इतने बड़े स्टार हैं और ये है वो है, भाई फोन ही उठाते, रिस्पॉन्ड नहीं करते. आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट टाइम. ओके, आई डू नॉट नो यू दैट टाइम. सो आई यूज्ड टू बी लाइक, आई वाज ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट. मेरा काम था कोऑर्डिनेट करने में. कोऑर्डिनेशन तो सबसे हो गया मेरा, भाई राहुल भाई से नहीं हुआ मेरा. अब नाउ व्हाट टू डू. एंड देन Lucian used to ask me, did you connect Rahul? I said yeah, but he's not answering. Yeah, he's not answering my phone also. फिर I'll be okay, फिर ठीक है, at peace. And then when I met you, I still had that thing कि 2010 का ना वो, that memory कि भाई very very difficult to approach and all. And one day, आपको शायद याद नहीं होगी ये बात, हम लूशन दुबे के घर पे मिले थे हम, और 2010 की बात है, और हम टेबल पे बैठ के on her dining table, you and I, we were talking, we were discussing about Ji Saab Ji of her new play. जी साहब जी. जी, वो the new play. And तो आपका तो ऑरा वैसे भी शुरू से ही था. And when अभी भी है, and when I met you last year at the India Habitat Center, and we were on the same stage, same panel together, I was like, what a cool guy, yaar, what a wonderful guy. Then and so आपका सबसे बड़ा प्लस है, you are a wonderful human being. Your education background is so strong, it's rock strong. तो आपने, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपने जहां पे हाथ डाले. देखो, एजुकेशन बैकग्राउंड सुब्रमण्यम स्वामी का भी है. I love you. No, I'll tell you what. Education is good, but neither necessary nor sufficient. कि मैं जब गांव में काम किया हूं ना, बहुत सारा, इतने औसम लोग और बिल्कुल बिना डिग्री के मिले, तो वहां मैं सीख गया था कुछ चीजें. आदिवासियों के साथ गांव में जब मैं रहा था, मैं सीखा था कि मनी एंड हैप्पीनेस आर नॉट रिलेटेड. एजुकेशन एंड विजडम आर नॉट रिलेटेड. There are a lot of people who are and intelligence are not related. So many people never get the chance to get educated. Very true. इतने एजुकेटेड लोग हैं ना. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यार, इंडियन ओशन के साथ ना हमेशा एक होता है ना कि ऑफिस में एक बॉय होता है, बॉय जो ऑफिस चलाता है. हमारे साथ दो रहे हैं. एक है रातुल अली फ्रॉम गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट इन असम, और एक है मनोज कुमार फ्रॉम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. अगर ये लड़के मेरे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में पैदा होते ना, they would have been, but because of where they were born, their natural intelligence and ability has not had a chance to flower to the point where they can make it. And this is what I want India to become, a place where everybody gets the opportunity. होना चाहिए यार. जब तक वो नहीं होगा तब तक हम लोग बात ही करते रहेंगे इंडिया के बारे में. इतने सारे हमारे पास इंटेलिजेंट, एबिलिटी वाले, स्मार्ट इंसान हैं, मगर सरकमस्टांस उनको आगे नहीं बढ़ने देता. I'm sorry, I suddenly become very serious, but when you talk about you are right. No, you are right, absolutely. And आपने बीच में कहा था ना कि भी something happened suddenly, your screen froze. वो screen freeze नहीं हुआ था, actually technically error भी नहीं था. वो क्या हुआ था, आपने भी बोला I'm sorry, मैं दरअसल mesmerize हो गया था आपको सुनते हुए. वाकई में राहुल भाई, it is genuinely mesmerizing listening to you. तो इसलिए आपको ऐसा लगा होगा. But देखिए, आपसे गुफ्तगू में तकरीबन 1 घंटा होने को आ रहा है almost, and I just did not realize वक्त कहाँ निकला. So you are such an interesting it's just an hour. Yeah. And I reckon that you are busy, and you are, in fact, I'm grateful to you. You made me speak to my dear friend Shanab Alam, who is the first guy I met जब मैं बॉम्बे गया था भाई. And and you acted in a film Boga Khidki. Yes, that's right. Award-winning film, huh? That's right. Very nice. Shanab Alam and Priyanka Chopra have produced it together, and Janu Barua has directed that. So it was great. And उस टाइम पे मैं बम्बई गया था, I told Shanab, मेरी बात हुई थी कि हम साथ में काम करेंगे.
बस बात वी केप इन टच, कभी फेस्टिवल्स में मिल गए, फिल्म फेस्टिवल्स में, यहाँ पे प्रोग्राम में मिल गए, सालों बाद हमने साथ में काम किया. सो इट वाज व्हाट यू मैनिफेस्ट, व्हाट यू थिंक डू कम्स ट्रू, इट डज कम ट्रू अल्टीमेटली. Yeah. राहुल भाई, Well, then let me manifest that I want to go to South America and perform. I you hope will, it comes true. you will, you will, you will, you will go to, and you will go to, which place is this? I'm forgetting. Brazil. ब्राजील तो आप जाएंगे जाएंगे, yes. And which theater is this? I'm रॉयल नेशनल थिएटर लंदन में तो आप करेंगे ही करेंगे, आपने कर रखा है मेरे ख्याल से. यार मैंने I've played at various. That's right. I'll tell you what. I've played at Gorky Park in Wow. Moscow. Wow. I've played in Trafalgar Square. जब हमारा एक गाना है कि रानी करी धूल में लुटनिया है, हिले ले झकझोर दुनिया, उस पॉइंट पर ट्रफालगर स्क्वायर में ये गाना गा के बकिंगम पैलेस की तरफ हाथ बढ़ा के हमने कहा रानी करी धूल. पता है राहुल भाई, आप जब इंडोनेशिया का किस्सा सुनाया था ना अपना, तो आई कुड कोरिलेट विद दैट विद कंप्लीटली विद, जब मैं एक बार ना अपना एक प्ले लेके, मैं सोलो प्ले परफॉर्मेंस है, आई एम द प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड द ओनली एक्टर, तो लॉजिस्टिक्स आर वेरी सिंपल, सो आई हैव ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली विद दैट प्ले. तो इसको मैं कुवैत लेके गया था, तो कुवैत के शेख लोग थे, रॉयल फैमिली के, वो लोग भी आए. अब बैक स्टेज आके अंग्रेजी 4 भाषाओं में है, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, उर्दू में है और संस्कृत में है. क्या बात. 4 डिफरेंट, मतलब ये नहीं कि 4 डिफरेंट वर्जन तो एक ही है, उसमें अलग अलग कहानियां हैं. करेक्ट. अलग अलग भाषाओं में मैं समझा रहा हूं मैं, सो इट गिव मी अ चांस टू शो माय वर्सटैलिटी एंड ऑफ माय कमांड ओवर द अदर लैंग्वेजेस एज वेल. So the royal family of Kuwait, they came backstage after the play and they told me, well, we do not speak Urdu or Hindi or Sanskrit, so we do not really understand what you were doing that time. But by the way you were doing it, we could say something very nice. That was a compliment. And as you said, music is a language of the soul. A person who does not like music, I don't understand. जो music सुनते नहीं है वो क्या उनकी, how do they feed their soul on? It was really wonderful being in conversation with you, Rahul bhai. I do not want to take much of your time. I know you are busy. You've been very, very generous with my time, very kind to me, and I'm really, honestly grateful to you. Before we call it a night, any last message you would like to give to our viewers who would be listening to you, who would be getting inspired by you? Anything? Okay, so I will just say happiness is more important than everything else. And happiness is a very elusive thing. But let me assure you that money does not bring happiness necessarily. It helps to have some. It definitely helps. I'm not saying you should be poor. I'm saying that should not be the main criterion. What you have to first understand, what makes you happy. आपको क्या करके खुशी मिलती है, उसको अगर आप खोज पाओ और उसको अगर आप करने की कोशिश करो, जिंदगी में बड़ा मजा आता है. और मजा आना चाहिए ना जिंदगी में. मजा जब ठीक है, जब मजा आता है, then the tough times are easier. We've all been through, just the last 2 years have been tough times for all of us. And a lot of people got very depressed and a lot of people got very upset, especially younger people. ना उनको लगता है कि 2 साल मेरी जिंदगी, and I am going to be 60 and I'm like 2 साल 2 साल हम लोग यार स्कूल में भी तो 12 साल छोड़े थे हम लोग. I love you as a viewer. When I was in school, it seemed to me when I was in class 5 कि ये तो साला चलते ही रहेगा यार, ये तो खत्म ही नहीं होगा, मैं यही करे जाऊंगा पूरी जिंदगी. क्लास 12th के बॉय लगते थे बड़ी बड़े सीनियर भैया है, तो जब खुद 12th में आए तो क्या हम जो क्लास 6 के हैं, 5th के, तो बहुत छोटे हैं भैया. एंड दूसरी चीज पता, जब मैं कभी कभी पढ़ता हूं कि किसी को 10 में कम नंबर आ गए, उन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया, यार प्लीज, इट डज नॉट मैटर. डोंट लेट दीज थिंग्स बी योर साइन पोस्ट और गाइड पोस्ट. आगे जाके ना सब कुछ ठीक हो जाता है. बिल्कुल. राहुल भाई,
I failed in school. I repeat a year in class 9th और 10th में मेरे को कंपार्टमेंट आया. आपने 10th की बात करी. आज की तारीख में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, माय थिएटर स्किल्स एंड माय फेलियर्स हैव मेड मी. इन्हीं की See? वजह से मेरे को लोग दावा देते हैं, बुलाते हैं कि नॉट टू टॉक अबाउट माय सक्सेस स्टोरीज, कुछ ऐसी खास है भी नहीं, बट टू टॉक अबाउट माय फेलियर स्टोरीज, एंड नाउ दैट हैज बिकम माय स्ट्रेंथ. अगर Yeah, yeah, सोचिए. that is so beautiful, Ali. I mean, that's great. Yeah, थैंक yeah, यू भाई. because मेरा तो दिल टूटता है यार जब मैं कि यार तुम 18 साल पे तुमको लग रहा है कि बस, अरे नहीं यार, बहुत कुछ है जीने के लिए, बहुत कुछ है आगे, छोड़ दो ये सब, ठीक है, जनता को बोलने दो. एंड द थर्ड थिंग इज दैट वाटर ऑफ अ डक्स बैक. लोग कुछ तो, वो जो गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. बिल्कुल छोड़ो बिल्कुल बेकार की बातों में, भीग न जाए तेरे नैना. बिल्कुल बिल्कुल राहुल भाई. हाँ जी. छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे. ब्यूटिफुल. I oh anyway, so on this note, I think it's a good note to quit on. शुक्रिया. All right, आपने मेरे मन की बात पढ़ ली. मैं आई वाज हेजिटेटिंग बट आई वांट यू टू सिंग एक या दो लाइन, वो भी निकल आया. शुक्रिया. आई मीन यू Ali. आर रियली अ माइंड रीडर एंड अ ट्रू जीनियस, एंड थैंक यू वेरी मच. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू राहुल भाई. थैंक यू Thanks, सो Ali. मच. Okay, bye bye. बाय. See you. गुड नाइट. See you. गुड नाइट राहुल Bye. भाई. Bye. Yeah.